Very good evening, all of you. Hope you all are doing well. Let's start with today's session, guys. Now, in today's session, one more object we are going to cover, that is math object, inbuilt object provided by JavaScript, and it gives a lot of mathematical functionalities. Like you want to find out rounding, you want to do trigonometric operations, logarithmic operations. So many facilities this math object gives. You don't have to create instance of it. Huh? It doesn't provide any constructor or anything like new and then math. Directly, you can start using this math object dot and you can access it properties and methods. Whatever methods, properties are provided by this math object. So, what all facilities it is giving, we will learn one by one. So, math object, as I said, it's a built-in object already provided by JavaScript implementation. Means it's already there available in your browser, and similarly if on the server side, the node also is allowing you to use it. Okay, so it's a built-in object and it is providing its own properties, and those properties are constant. You cannot change it. Like standard properties like value of pi 3.14, or value of Euler constant E. Correct? So some standard values are there as a property, and then some methods are there. Methods for trigonometric operations, logarithmic operations, rounding operations, all we will be learning one by one. Quickly, I will be telling you. And remember, math object, no need to create an instance of it using new and all, as we did it for array. In case of array, you can create an array instance by writing new array. Correct? No such rule. Directly, you can start using this math object. It doesn't have any constructor or anything. Okay, no need of new and all. Direct start using this math object by writing math dot, and you can access the properties and methods. Okay, first, some constant properties, I'll tell you. Constant, why? Because they are initialized and kept, but we cannot change it. So some constant values, as I said, pi value, you can directly write math dot pi. Okay, and this is the standard in trigonometry. I hope you have used it. If you are coming from science background, then 11, 12 also you have used. And in 10th also we were having all this. In trigonometry, we have studied value of pi as 3.14. Getting in radians, it is considered as 180 degree. That way, radian to degree when we convert. Okay, radian to degree, degree to radian, like that. So pi value is there. Then we have some Euler constant E. E is called as a Eulerian constant. Then some standard log values. Then we need root of 2 or 1 upon root 2. These are some constant values needed in mathematical calculation. So those values they have already created and kept. So these are ready-made mathematical values. See, example, math.pi, math.e. This gives you the Euler constant, 2.7. This we have used it in 12th and on. Then log of 2, natural logarithm, log of 2 to the base e, log of 10 to the base e, then log of e to the base 2, log of e to the base 10, then square root of 2, 1 upon root 2. So all these, whenever mathematical applications come, getting generally like games and game applications and all, they're sure you'll need it. Like any object, you're moving it from one place to another, you're rotating any object. That time, all these constants are needed. I don't know whether you have learned computer graphics and all in your academics. Getting so these are few constants. You can access them. Example here, you can access it just by printing math.py, math.e. Okay, few constants, if you want, you can check.
Okay, directly also you can try math.pi. It gives you the pi value. Math.e will give you the Euler constant. Then this square root of 2, square root of 1 upon 2, 1 upon 2. So all these in trigonometry we need. Root 2, 1 upon root 2, that is for tan 45. Tan 45 value is this only. Okay? So these are different constants. For log also, standard logarithm and all that you can print and see. Then some methods are there for this math object. Some standard methods. One category is related to rounding. Rounding methods are there. So in case of rounding, we have one that is floor of x. Now floor of x will return the nearest integer which is less than or equal to x. Nearest integer which is less than or equal to x. Nearest integer. Like see, example like if I give 2 and 3, these are the consecutive integers. Consecutive. So anything which come in between this, anything 2.01, 2.5, 2.99, whatever value come between 2 and 3, floor is always going to be 2. Because I said like floor you can assume as floor of your house also, no? Where you're sitting, there is a floor. And if you see upside, there is a ceiling and floor, right? So any value which come between these two consecutive, the nearest integer is 2 for floor. And there is ceil also. Ceiling will give you the nearest integer which is greater than or equal to x. Okay? So suppose you have 2.5. So what is the nearest integer? Integer means whole number, guys. When I'm talking about integer means whole number. So which is the nearest whole number to 2.5? Nearest whole number is 3, which is greater than equal to that. And which is the nearest integer which is less than equal to 2.5? That is 2. Getting? So not only 2.5, you take 2.1, you take 2.9, anything. Anything between 2 and 3. Floor is 2 and ceil is 3. For negative, it is opposite, remember. Like when you have -2 and -3. Okay? -1, 0, like that we have. So always remember between -2 and -3, whatever you get, floor will be -3. Why? Because -3 is less than -2. So what will be floor? -3. And what will be ceiling? -2. But between 2 and 3, floor is 2 and ceiling is 3. 3 ceiling है and floor 2 है. ठीक है? But यहाँ floor -3 है and ceiling -2 है. ठीक है? तो ये याद रखो ध्यान से carefully. Then floor, seal, then we have trunk also, trunk, which will just remove everything after dot. Dot के बाद remove कर देगा. ठीक है? So these methods decide which integer a number becomes. Whatever number you give, what will be the integer of that number? Okay. So first is round. In rounding, standard mathematics concept is applied. जब भी rounding करते हो, okay. So what it does, it follows the mathematics principle. I hope you know it. Like if the value is zero point 0.5 and above, it will add 1 over here. And if it is below, then it will not add. Like if you have 2.3316, whatever. And now if you are rounding it, it will be 2. But if it is 2.6 something, then it is 3. Because this is 5 and above 5. It will add 1 over here. So rounding may be 3 also or rounding may be 2 also. तो जैसे ये वैल्यू राउंड होकर 2 हो रहा है बट जबकि ये वैल्यू राउंड होकर 3 होता है तो जो हम स्कूल में ओल्ड स्कूल मैथमेटिक्स प्रिंसिपल सेम ceiling gives nearest integer which is greater than equal to x. Floor gives nearest integer which is less than equal to x.
एंड ट्रंकेट राउंडिंग वगैरह नहीं, एवरीथिंग आफ्टर डॉट ड्रॉप करेगा. जैसे 2.9 रहने दो या 2.3 रहने दो, एवरीथिंग आफ्टर डॉट इज ड्रॉप्ड एंड यू विल गेट एवरीथिंग बिफोर डॉट. बिकॉज ये सारे मेथड्स क्या रिटर्न कर रहे हैं, इंटीजर. ठीक है, देखो यहाँ जैसे राउंड अप 4.6, इज इट गिविंग 5? बिकॉज ये 5 एंड अबव 5, इसलिए यहाँ एक ऐड किया. फ्लोर ऑफ 4.9 इज 4 एंड सीलिंग ऑफ 4.9 क्या होता था, 5. ठीक है, देखो जैसे 4.1 का सीलिंग 5 है एंड ट्रंकेट जब करते हो तो पॉइंट के बाद का सब कुछ लॉस होता है. ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंडिंग. See, math dot floor. Any value you take, like I'm taking 3.4, the floor is 3. And the same thing, if I give negative, then floor is -4, remember. Can you see? And same thing if I give for ceiling. Okay, the ceiling of 3.4 is 4 and ceiling of negative is -3. See, getting? And for truncate, for round, I hope you know it. See, rounding, whatever, 4.66, whatever you get. As it is 5 and above 5, it is adding 1 here. And same thing if it is 3 and then 5, 6, whatever, it is 4, right? And math.trunc if I do, whatever, 5.6, jo bhi hai. Everything after dot is removed. So it depends on the application areas where lot of mathematical computations you have to do in that application. Then obviously we will need this maths. Okay. Then we have some functions like a function which gives you, returns you whether the number is positive, negative, or neutral. So if it is negative, it will return -1. If it is positive, it will return 1. And if it is neutral, means 0, it will return 0. So we have one function called sine. And another function is called apps, okay, which will return the absolute of your given number. Like if your number is positive, it will return positive only. But if it is negative, then also positive. In maths, we write like this. Depends on how much maths you remember, which you have learned in graduation or in your academics. हम लोग mod को ऐसे लिखते थे, mod of x, which is always positive of x. Negative है तो भी positive, positive है तो भी positive. ठीक है? So for that, we have two functions. One is sine, returns the sign of a number. If it is positive, it will return 1. If it is negative, -1. If it is 0, 0. So tells whether a number is positive, negative, or 0. Absolute returns the positive of the given number. जो भी नंबर दोगे उसका पॉजिटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव. ठीक है, देखो math dot apps of x and math dot sine of x. Few examples दिए. 10 पॉजिटिव है इसलिए 1 है, -7 नेगेटिव है -1, 0 न्यूट्रल है इसलिए 0, बट नेगेटिव दिया है इसलिए न्यूट्रल ही है, therefore it is -0. एक्चुअली मैथमेटिक्स में -0 doesn't make any sense. एंड अगर स्ट्रिंग दिया तो स्ट्रिंग इज नॉट अ नंबर, ये स्ट्रिंग नंबर नहीं फॉर्म करता है, तो इसलिए नैन आएगा. गेटिंग? ओके, तो आई होप these two functions are clear. See, math dot apps of -5. ठीक है, स्ट्रिंग अगर देते हो एंड स्ट्रिंग में अगर नंबर्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इट विल इम्प्लिसिटली कन्वर्ट दैट नंबर स्ट्रिंग टू नंबर. तो ये स्ट्रिंग टू नंबर -100, -100 का एप्स 100 आ गया, वो चल गया. बट ऐसा स्ट्रिंग जो नंबर में नहीं कन्वर्ट हो सकता है, इट गिव्स नाम. गेटिंग? एंड अबाउट साइन, गॉट इट, लाइक 10 पॉजिटिव है इसलिए 1 आएगा, -10 नेगेटिव है, 0 न्यूट्रल है,
-0 दो, -0 ही देते हैं। ठीक है, तो दिस पार्ट इज क्लियर। एप्स भी दिया है, देखो 10 का पॉजिटिव 10 ही, -10 का पॉजिटिव 10, 0 0 ही, -3.5 का 3.5। डबल कोट 5 में नंबर है, तो इसलिए वो कन्वर्ट हो गया टू 5, एंड 5 का एब्सोल्यूट 5 आएगा। बट डबल कोट एबीसी यू कैन नॉट कन्वर्ट इट टू अ नंबर, it converts to NaN. That is not a number. ठीक है, तो I hope this part is also clear to you. Then we have functions to find out square root and anything raised to anything. Power calculate करना है, तो भी functions दिए, math dot pow give x and y. It will return x raised to y. Okay, and then we have square root sqrt of x. I guess they have given cube root also, CBRT. The latest, the newer version of JavaScript has provided this also. I guess, like CBRT, it will return the cube root. Cube root means you're understanding, the third root of x. Square root. Square root को 2 लिखने की जरूरत नहीं. Root of x means x raised to half. I hope you know. Cube root of x means x raised to 1/3. ठीक है? मैथ्स रिकॉल करना है आपको. So there are functions for providing roots and power. So these methods help you to raise numbers to exponent. Exponent means जो base होता है, okay, एक number to another. So base raised to something is called exponent. And if you want to find out the root of it, तो एक है power x comma y. It will return x raised to y. Square root of x, cube root of x. ठीक है, देखो 2 raised to 3 is 2 raised to 3 8, square root of 16 is 4, cube root of 27 is 3, थर्ड रूट है ना, तो 3 into 3 into 3 करके देखो, 3 into 3 9, 9 into 3 27, और ये स्क्वायर रूट है, तो 4 into 4 is 16. ठीक है, तो जस्ट क्विक कंफर्मेशन देना टिल हियर these Yes, I got functions. it. Example देखो, math dot sqrt of whatever value you can take, like I'm giving 121. So 121 is square root of 11, I guess, right? तो नियर अबाउट देते थे 125 वगैरह, तो भी 11 पॉइंट समथिंग आ गया. ठीक है, सेम वे क्यूब रूट चाहिए. क्यूब रूट ऑफ अभी जस्ट नाउ 27 दिया, तो इट विल गिव 3. और इफ आई गिव 625, तो 625 I guess, is it 5 into 5 into 5, 125 होना चाहिए. See, 125 का क्यूब रूट 5. क्यों? क्योंकि 5 into 5 into 5. 5 into 5 25, 25 into 5 1. मुझे लगता है 625 का नहीं होगा, 625 का स्क्वायर रूट 25 आएगा. SQRT of 625 will be 25. तो क्यूब रूट पे पावर है math dot pow. If I write 2 comma 10, 2 comma 10, will it return 2 raised to 10? 2 raised to 10 is 1024. See, getting 2 raised to 9 512, right or not? 10 raised to 3 is 1000. So it returns power and square roots and cube roots. Then we have functions for finding out minimum and maximum. And you can pass any numbers, minimum and maximum. Math dot min variable number. इसका कहना है कि यहाँ कितने variable number of arguments pass कर सकते हैं. Okay, it's not like you can pass only 2. So you can pass x1, x2, dot, dot, dot. It will return the minimum from this list. And same way we have max will return the maximum. So कितने सारे काम हमारे कम किए ना.
सोचो अगर इतने वैल्यूज में से मैक्स निकालना रहता था और हमें अगर इसका एल्गोरिथम लिखना है तो वो ट्रेडिशनल एल्गोरिथम है ना कि ये सब चीजें एक अरे में चले जाएंगे and फिर अरे में से मैक्स ढूंढने के लिए आप लोग एक फॉर लूप लिखोगे. Yes or no? You'll compare the previous max with the next element. अगर अगली एलिमेंट प्रीवियस मैक्स से ज्यादा है तो अगले एलिमेंट को नया मैक्स बनाओगे एंड कंटिन्यू द चेकिंग. तो वो जो ट्रेडिशनल एल्गोरिथम्स है, जो लेगेसी कोड्स है, वो ऑलरेडी इन्होंने इंप्लीमेंट कर दिए. इनका कहना है कि जो अ, उसको कहते हैं परंपरा परंपरा से चल रहा है कि वही वही लॉजिक्स लिखे जाते हैं और जिनको रिप्लेस भी नहीं कर सकते. वो लॉजिक लगता है, उसको उसको रिमूव भी नहीं कर सकते. यू नीड दैट लॉजिक्स. तो दे आर सेइंग दैट व्हाई यू आर राइटिंग दैट लॉजिक्स एंड वेस्टिंग योर टाइम, वी विल डेवलप इट. तो ये फंक्शन जो है मिन मैक्स, इसके अंदर वो सब लॉजिक ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है. यू आर जस्ट कॉलिंग दैट फंक्शन एंड पासिंग योर वैल्यू. ओके, वो आपको इन वैल्यूज में से जो मिन है या मैक्स है वो ला के देता है. दैट इज व्हाट मॉडर्न कोडिंग इज. मॉडर्न कोडिंग में वही कॉन्सेप्ट है. मॉडर्न कोडिंग कहता है कि ज्यादा से ज्यादा डिक्लरेटिव की तरफ जाना है. डिक्लरेटिव साइड की तरफ मीनिंग समझ में, यू जस्ट हैव टू टेल व्हाट टू डू. डोंट बॉदर अबाउट हाउ. देयर इज समवन एल्स हु इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट. करेक्ट. तो न्यूअर जावा वर्जन्स भी वही तो कर रहे हैं. जावा 8 के ऑनवर्ड सब कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल इंटरफेसेस एंड एरोज स्ट्रीम्स, ये सब आने के बाद कोडिंग कितना कम कम होते जाता है. बट कोडिंग अल्टीमेटली बैकग्राउंड में वो उतना ही कोड जनरेट हो रहा है. प्रोग्रामर का एफर्ट्स कम हो रहा है. बैकग्राउंड में जाके वो उतना ही लॉजिक जनरेट हुआ है जो हमने ट्रेडिशनली किया रहता था. करेक्ट. तो वो कंसेप्ट्स याद रखो. नाउ तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स नो कोड कंसेप्ट. मुझे लगता है सुना भी रहेगा कि पीपल माइट हैव हर्ड अबाउट नो कोड और वाइब कोडिंग एंड ऑल. इफ यू हैव हर्ड हाउ AI is used for doing all that things. So min and max. So max returns the smallest number from the given values. इसको आप list of values भेज दो, it will return the maximum from it. And same is for minimum. Returns the minimum, and this I wrote opposite I guess. यहाँ ब्लंडर किया मैंने, यहाँ max लिखना था. Sorry for that. ठीक है. तो मेन फंक्शन रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट, मैक्स रिटर्न्स द लार्जेस्ट. देखो कितने भी वैल्यूज पास, इसको हम कहते हैं वेरिएबल आर्ग्यूमेंट. अब बोलो मत ये क्या होता है. हमने पढ़ा है जब हमने फंक्शंस पढ़े, when we discussed the topic called functions, user defined functions. फिर फंक्शन डिफाइन कैसे करता है, कॉल कैसे करता है, फिर उसके पैरामीटर पास. तो कुछ याद है कि नहीं. पोजिशनल पैरामीटर, फिर हमने डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, फिर वेरिएबल आर्क. वेरिएबल आर्क में भी दो वेज बताए थे. एक ओल्ड स्टाइल यूजिंग ऑब्जेक्ट कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स, एंड जो न्यूअर स्टाइल है बाय यूजिंग रेस्ट ऑपरेटर डॉट डॉट डॉट. याद करो गाइस, सब सिखाया हुआ है, ये पूरा टॉपिक हुआ है. तो जब हम इसको एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट भेज सकते हैं तो इट इज कॉल्ड एज वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट. मीन्स यहां से जब हमने मिन कॉल किया, करेक्ट, तो यहां हम लोग कितने भी वैल्यूज भेज सकते हैं. बट जहां कहीं मिन डिफाइन किया वो मैथ ऑब्जेक्ट के अंदर, वहां ये ऐसे लिखा गया डॉट 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 आर्क्स. तो ये सारे वैल्यूज पैक हो जाते हैं इनटू एन अरे, एंड वो अरे इसमें आके रिसीव होता है एंड अंदर जाके वो उसको अरे ही ट्रीट करता है. आर्क्स ऑफ 0, ऑफ 1, ऑफ 2 ऐसे करके एक्सेस करेगा. किसके अंदर, वो मिन के अंदर या मैक्स के अंदर. ठीक है. तो यू कैन पास एनी नंबर. फ्यू एग्जांपल्स दिए, देखो जरा चेक करो कैसे वर्क हो रहा है. Here I passed some list of basic numbers. Okay, 5291. So minimum is 1, maximum is 9. Okay, then with variables or values.
इसमें आप वेरिएबल्स पास कर सकते हो, नहीं पास किया मैंने यहाँ, बट यू कैन पास वेरिएबल्स. आई विल शो यू. लेट x equal to 10, y equal to 5, z equal to 9. ठीक है. एंड देन यू आर राइटिंग math dot max x comma y comma z. करें. तो ऐसे वेरिएबल्स, वेरिएबल्स है या वैल्यूज है, तो यू कैन टेक वैल्यूज, ये वैल्यूज ही है. फिर नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकते हैं. देखो -5, -10, 0. हु इज मिनिमम? -10. एंड हु इज मैक्सिमम? 0. फ्लोटिंग वैल्यूज हो सकता है. अगर फ्लोटिंग है, इफ देर आर फ्लोटिंग, देन फ्लोटिंग में जो मिनिमम मैक्सिमम 2.1 एंड 9.8. स्ट्रिंग्स भी हो सकते हैं, बट इफ यू पास स्ट्रिंग, ऑल द स्ट्रिंग्स आर कन्वर्टेड टू integer internally. String number conversion. Getting? See here. Double quote 5, double quote 100, double quote 3. All the strings are converted to number. But suppose the string contains something which cannot be converted to number, like 500, and here I'm giving ABC. It will give nan. Why? Because ABC cannot be converted to, ABC किसमें convert नहीं हो सकता, नंबर में, इसलिए nan. ठीक है. So that is clear. When you give empty, nothing you pass, it returns infinity. Positive infinity minus negative infinity. सिंगल वैल्यू दिया तो वही वैल्यू मैक्स है, वही मिन है. ठीक है. एंड अगर अरे दिया है विद डॉट, तो ये अरे सेपरेट हो जाएगा एंड फिर पास. इसको हम कहते हैं स्प्रेड कर दिया, अनपैक किया. अनपैक मीन्स एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल आपने पहले एक अरे क्रिएट किया. देखो 10 है, 5 है, 8 है, 2 है, 12 है, 7 है. ठीक है. दिस इज योर अरे. एंड नाउ इफ यू आर राइटिंग math डॉट मैक्स, तो उसको डायरेक्ट अरे नहीं दे सकते हैं. देखो वो नान है, क्योंकि इट इज डायरेक्टली अरे ऑब्जेक्ट. उसको स्प्रेड करके दो. 3 डॉट डालो. अब 3 डॉट डाल दिया तो क्या हुआ? इट इज नॉट पासिंग अरे, इट इज पासिंग एलिमेंट्स ऑफ अरे. अनपैक करके भेज रहा है. मीन्स पास करते समय, when it is passing values to max, it is not passing a, it is passing values of a. It is unpacking. उसको unpacking concept कह सकते हैं. तो 10, 6, 8, 2, 12, 7, all these values are passed to max, and then it is returning the max of it. Understanding? See carefully. Yeah? जब अरे पास करते हो तो डायरेक्ट अरे पास किया तो नैन आएगा, बट स्प्रेड ऑपरेटर यूज किया, इसको हम स्प्रेड ऑपरेटर कहते हैं. तो व्हाट इट इज डूइंग, इट इज फर्स्ट अनपैकिंग द वैल्यूज ऑफ दैट अरे. या अरे के वैल्यूज सब अनपैक कर दिया, 10, 6, 8, 12 स्प्रेड किए, एंड फिर वो सारे सेपरेट वैल्यूज किसको पास हुए? मैक्स को. गेटिंग? तो दैट इज द केस. एंड इफ यू हैव एनी वन वैल्यू एज नल, ओके, तो नल इज ऑल्सो इंटरनली कन्वर्टेड टू जीरो. नल या इंटरनली जीरो ट्रीट होगा. बुलियंस पास किया तो ट्रू 1 है, फॉल्स 0 है. तो ट्रू इज 1 एंड फॉल्स इज 0. तो व्हाट विल बी मिनिमम फ्रॉम 1 एंड 0? 0. व्हाट इज मैक्सिमम बिटवीन 1 एंड 0? 1. एंड इफ यू पास एनीथिंग व्हिच इज अनडिफाइंड, एक भी वैल्यू अनडिफाइंड है, तो डायरेक्टली नैन. तो ये सब पॉसिबिलिटीज याद रखो. जनरली whenever you are facing technical rounds, interviews, if you are applying to that domain, अगर आपका जॉब डिस्क्रिप्शन वैसे कि जिनको जावास्क्रिप्ट की नीड है, तो ऑब्वियसली व्हेन दे विल बी चेकिंग योर टेक्निकल नॉलेज, दैट टाइम सच बेसिक क्वेश्चंस आर श्योर आस्क्ड. ऐसे छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस जहां आपका प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स क्लियर है कि नहीं चेक किया जाएगा. करें. भले आप कितने बिग बिग प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं, क्योंकि एनी बिग प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ व्हाट, एआई टूल्स का हेल्प ले सकते हैं. बट उसमें से जब प्रॉब्लम आएगा, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो जो भी डेवलप किया है, उसमें जब बग्स आएगा, तो बग्स निकालने के लिए जिसका प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स क्लियर है,
वो बर्ड्स बराबर निकाल पाएगा। ये ठीक। तो यू शुड बी अवेयर अबाउट व्हेन यू गेट रिस्पेक्टिव आउटपुट। तो एक भी अगर अनडिफाइंड है तो ऑलवेज आउटपुट क्या आएगा? नल। नल रहेगा तो नल इज इंटरनली ट्रीटेड एज जीरो। बुलियंस रहेंगे तो इट इज कन्वर्टेड एज वन एंड जीरो। स्ट्रिंग्स रहेंगे तो स्ट्रिंग्स आर कन्वर्टेड टू नंबर्स। द स्ट्रिंग डजंट कंटेन वैलिड नंबर, देन नैन आने वाला है। एम्प्टी के लिए याद रखो इंफिनिटी, नेगेटिव इंफिनिटी। सिंगल वैल्यू रहेगा तो वही मिनिमम है, वही मैक्सिमम। अरे पास करते समय केयर लो, उसको स्प्रेड करके पास करो बाय यूजिंग दिस ऑपरेटर, थ्री ऑपरेटर, डॉट डॉट डॉट। डॉट 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 लिखा तो ये अरे नहीं पास होगा, अरे स्प्रेड होगा, अनपैक होकर पास होगा। It will pass that values 8, 4, 12, 2, that it will pass. ठीक है? तो क्विक कंफर्मेशन मुझे दे सकते हो अबाउट मैक्स एंड मिन? अलग अलग सिचुएशंस है, इफ यू वांट यू कैन गो थ्रू आल्सो ऑल दिस। Yeah, got inside. Exactly. चेक कर सकते हो फॉर few things, like for empty you try, see is it return, and that infinity is a value in JavaScript. It is some constant value. ठीक है? empty के लिए सिंगल वैल्यू दिया तो वही मैक्स है, वही मिनिमम है। ठीक है? अगर बुलियंस दिए, ट्रू है, फॉल्स है, तो इंटरनली जीरो वन, इसलिए मैक्स ऑफ वन एंड जीरो इज वन। देन जनरेटिंग रैंडम नंबर्स, राइट? वी फील रैंडम मीन्स मैजिक, रियलिटी में होता है मैजिक, बट यहां कुछ रैंडम जनरेशन अल्गोरिथम यूज होता है। ठीक है? तो every time you'll get a new random. So we have one function called random, math.random, which will always generate any number in the range 0 to 1. 1 is always exclusive. 1 हमेशा क्या रहता है? Exclusive. 1 कभी भी inclusive नहीं रहेगा। मीन्स आपको 0.99999 मिलेगा बट कभी 1 नहीं। ठीक है? तो any random number in the range 0 to 1, use random. See, math.random into 10. So now the scale is changed from 0 to 9, क्योंकि ये तो 0 to 1 देने वाला है। ठीक है? ये लाके देगा 0 to 9 और उसमें प्लस 1, तो इट बिकम्स 1 to 10। एंड इन जनरल अगर ये फॉर्मूला अप्लाई किया, मैथ डॉट रैंडम इंटू मैक्स माइनस मीन प्लस 1 प्लस मीन, ये जनरलाइज फॉर्मूला हो गया। तो इन दिस यू विल गेट एनी रैंडम नंबर इन द रेंज मिनिमम टू मैक्सिमम। अंडरस्टैंडिंग? अगर ये रेंज पास किया आपने मिन एंड मैक्स, always you will get values between it. ठीक है? It becomes a generalized formula. So math dot random, every time different random number you will get. See, in the range 0 to 1. ठीक है? It depends on the multiplication. Multiply 100 कहा तो it will be 0 to 99. Multiply 100. See, 57, 93, anything in the range 0 to 99. Never you will get 100. मैंने ऑलरेडी बताया। तो जनरलाइज फॉर्मूला लिख के ऐसा एक फंक्शन बना सकते हो। कैन यू डिफाइन वन फंक्शन लाइक दिस? फंक्शन my random, you can pass to it one max value, min value, or min and max. ठीक है? And it will return math dot random, and this formula you can build math dot random into multiply max minus min. Okay,
This whole thing you have to pass it to math.floor. When you pass it to math.floor, it will round it to nearest integer. Down rounding. Nearest integer less than equal to it. And plus I'll pass min to it. Okay? Now my function is defined, my random. I'll keep calling it my random. And I'm giving range 100 to 200. See, it is returning 177, 169. As many times you call, you'll get random number in the range 100 to 200. Because first you are subtracting max minus min. Max minus min. Subtract किया, उसको रैंडम जो आता है उससे मल्टीप्लाई किया और वो बेस मिनिमम ऐड किया. तो मिनिमम का 100 है. तो जो भी रैंडम है वो बेस 100 में ऐड ही होगा. 200 minus 100 कितना होता है 100. तो यू आर गोइंग टू गेट एनी रैंडम नंबर इन द रेंज 100. एंड वो 100 के रेंज में जो आया उसको 100 ऐड किया तो इट विल बी इन द स्केल 100 to 200 only, right? So any time you call it will return from that 100 to 200. So sometimes you need this random generation and all, like random colors generate करने हैं. ओके या समटाइम्स रैंडम क्वेश्चन नंबर्स पिक करने हैं. अगर अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का कोई वेबसाइट बनाया रहेगा तो आपके पास जो भी 100 क्वेश्चंस है उसमें से रैंडम 10 क्वेश्चंस पिक करने हैं. तो दैट टाइम टू जनरेट दैट क्वेश्चन नंबर also you can use this random. So many applications are there. Then we have some logarithmic functions also. Log. To calculate log and exponent में relation होता है, याद रखना. Meaning whenever we write y is equal to e raised to x, y is equal to e raised to x, then you can say x is log of y to the base e. कुछ याद है ऐसे y equal to e raised to x? So in schools, in colleges, you might have studied taking log on both the side. Right? कुछ याद है? So you can take log on both the side by taking log to the base e only. Yeah? So y is equal to e raised to y. So when I take log on both the side to the base e, so log of y to the base e is equal to log of e raised to x to the base e. दोनों साइड log to the base e लिया. अभी आपको लॉगरिथमिक का रूल पता होना चाहिए. log of a raised to b is b log a. है कुछ याद? यस नो तो बोलो. log of a raised to b I don't remember. पढ़ा है ये. log of a raised to b is same as b log a. है ना? ये b इधर. हमारे चटा सर ऐसे बोलते थे कि इसको गिरा दो. वो एक मूवी में वो दिव्या भारती जो ऊपर से गिर गई तो ही यूज्ड टू रिलेट अस कि ये कैसे गिर जाता है उधर. तो बी को इधर नीचे लेके आओ. करेक्ट? तो गिरा दिया उसको. तो b log a. तो यहां भी देखो ये x इधर आ सकता है ना. कैन आई राइट लाइक दिस? log of y to the base e is x. क्योंकि log of e to the base e 1 रहेगा. ये x यहां ला सकते हो ना. x into log of e to the base e. e to the base e is 1. Right? So indirectly अगर y is equal to e raised to x, then what is x? Log of y to the base e. Correct? Means log and exponent का relation. Logarithm and exponent are having a relation between them. ठीक है? See, so these methods, whatever we are going to learn, ln, log, log10, base अलग अलग रहेगा. एक नेचुरल लॉगरिथम होता है ना ln. कुछ याद है? ln लिखते थे. ln of x. वो नेचुरल मीन्स बेस ई. फिर log लिखते थे. वो नॉर्मली बेस 10 रहता था. फिर log 2 बेस 2 भी लेते थे. ठीक है? तो ऑल दिस इन मैथमेटिक्स, साइंटिफिक कंप्यूटेशंस जहां भी है, जहां भी कोई ऐसे एप्लीकेशंस है जहां लॉट ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेशंस आर गोइंग टू हैपन. Nowadays in ML and all we need it. And JavaScript is not an excuse. JavaScript भी AI ML में घुस गया.
इनिशियली सिर्फ पाइथन का वो था उसमें, पाइथन was a dominant one, but now JavaScript also has entered in nearly all the areas of machine learning, deep deep learning, computer vision, सब में JavaScript ने भी अपने अपने libraries develop की. So these methods answer the question, to what power must a base be raised to get this number? जो अभी मैंने बताया ना, to what power must a base be raised to get that number? करेक्ट, जैसे मैंने लिखा है कि x is equal to e raised to y. करेक्ट, तो फिर y क्या रहेगा? log of, तो what is y? तो y is log of x to the base. एक दूसरे का ये कॉम, मैंने एक्सपोनेंट से लॉग, लॉग से एक्सपोनेंट, दे हैव देयर रिलेशन. ठीक है, तो इसमें काफी फंक्शंस है. जैसे पहले है लॉग, लॉग ऑफ एक्स, इट इज नेचुरल लॉगरिथम, मींस इट विल गिव यू एक्स टू द बेस ई गाइस. ये क्या आ जाएगा? लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई. एंड ई क्या है? आज ही देखा ना, यूलर कांस्टेंट 2.7, वो यूलर कांस्टेंट. ठीक है, तो log of x to the base e, this is natural. log 10x अगर लिखा तो it is log of x to the base 10, log of x to the base 2. Get it? And this is log of x to the base e plus 1, natural logarithm. Returns natural logarithm of x, ये जो है plus 1. And this is exponent, पावर का ही काम करता है, बट यहां बेस फिक्स है. ठीक है, मैथ डॉट एक्सपोनेंट 8 अगर लिखा मैंने, तो इट इज सेम एज e रेज टू 8. मीन्स यहां बेस फिक्स है. वो इज बेस e, एंड e कांस्टेंट वैल्यू आपको पता है, यूलर कांस्टेंट, आज ही देखा था. ठीक है, तो exp x is same as e raised to x. You can get the same answer using power also. Huh, someone wants to ask something. Yeah. I wanted to ask in this the log x base to 2, it means if we have two base, it is like binary only, right? No, not like that. It is base value 2, means you can take log of 32 also to the base 2. Now this will be like this. Log of 32 is 2 raised to 5. Getting? Now log of 32 to the base 2 you can take. So 32 will be right as 2 raised to 5. Then 5 we can bring here. Okay? And then you get log of 2 to the base 2. So 2 to the base 2 is 1. So you will get answer 5, like that. But it's not necessary it has to be in power of 2. अब ये जैसे 33 रहता था, so you will get answer something near about 5 point something. Correct? It is just base value, what base you are taking. But base, that is what in the base we have learned, like we have in the digit position we have 10 base, in the binary we That is have. a number. That is a binary number, octal number. This is base means raised to. Just now I wrote na, x is equal to a raised to y. This base, यहाँ ये base and ये exponent. So वो it is base only means, raised to relation it is. हाँ, you got it. Okay. And वो जो कह रहे हो ना, वो number system का हो गया. Like you are writing a number 5262. तो ये each digit की place value होती है. 10 raised to 0, 10 raised to 1, 10 raised to 2, 10 raised to 3. That is also, उसको भी base ही कहता है, but वो base 10 हो गया. Means each number's place value is power of 10. फिर octal होता है जिसमें से 0 to 7, hexadecimal 0 to 9 and A to X. That is the place value of each digit. Here we are considering the base and the exponent. ये exponent है, ये base है. करेक्ट?
तो if you want y, then you have to take log of x to the base a. अगर y की वैल्यू चाहिए, मीन्स इनका कहना है अगर x ये a raised to y है, तो what is y? Then what is y? Log of x to the base a. So it can be any other base also, or it can be natural logarithm also, no? Base e भी ले सकते हैं, ln कहते थे हम लोग। 12th मैथ्स हुआ है कि नहीं? 12th में मैथमेटिक्स पेपर था कि नहीं? 11 12th दो मैथ्स पेपर रहते थे, M1 M2, आई रिमेम्बर। इंजीनियरिंग अगर किया रहेगा तो इंजीनियरिंग में भी M1 M2 M3 M3 तक पीछा नहीं छूटता था। एनीवे, ठीक है। तो यू गॉट इट। मुझे लगता है आपको समझ में आया कि यहाँ वो बेस मीन्स व्हाट पावर टू व्हाट, माने Yes. a रेज टू b जब हम बोलते हैं तो a बेस है एंड b एक्सपोनेंट, ठीक है। एंड log 1p means what? Natural logarithm only, just one added in that answer, ठीक है। few examples देखो, log of 10 लिया तो log of 10 to the base e है, ये natural logarithm है, तो 2.3। बट log of 100 to the base 10 लिया, अभी log of 100 to the base 10 2 ही आएगा ना। अभी जस्ट नाउ मैंने बताया कैसे कैलकुलेट होता है। देखो log of 100 to the base 10, now can I write 100 as 10 raised to 2 guys? Yes, we can write. ठीक है, base 10, then can we take this 2 here, then it becomes 2 log to the base, log 10 to the base 10. Now 10 to the base 10 is 1. So 1 into 2 is 2. Therefore you get 2. Get it? And this is exp1. exp1 means your Euler constant raised to 1. अब Euler constant क्या है? 2.7 raised to 1. तो वो ही आ गया। अब देखो log of 2 to the base 8, 3 आ गया। log of 2 to the base 8 नहीं, log of 8 to the base 2. Sorry for that. ठीक है, तो log of 8 to the base 2 है, तो ये 8 हम लिख सकते हैं as 2 raised to 3, फिर ये 3 यहां आ जाएगा, तो log of 2 to the base 2 is 1, 1 into 3 is 3, इसलिए 3 आता है। और log of 1p1, तो log of 1 जो आने वाला था ना उसमें जस्ट 1 ऐड होगा, प्लस 1, गेटिंग? तो दैट वे यू कैन फाइंड सम एग्जांपल्स, थोड़े एग्जांपल्स ले सकते हैं। देखो मैथ डॉट लॉग 2 लेते हैं, log 2 32 लिया, इट विल गिव यू 5। अब 32 के नियर अबाउट रहेगा लाइक 34, तो 5 पॉइंट समथिंग ही आने वाला, ठीक है। log of 10 अगर लेता हूं और 1000 लेता हूं, इट विल गिव 3, क्योंकि 1000 इज 10 रेज टू 3, 3 इधर लेके आ सकता है। log of 10 टू देन नेचुरल लॉग ले सकते हो, तो log of 10 इतना है, ठीक है। तो log of 1p अगर लिया 10 सी, जस्ट उसमें प्लस 1 लेता है, प्लस 1 ऐड करके फिर लोगैरिथम कैलकुलेट, तो थोड़ा बहुत एक्यूरेसी चेंज होगा। सेम थिंग आई थिंक यू कैन चेक इट विथ 11, नो, अंदर प्लस 1 करके फिर कैलकुलेट करेगा, प्लस 1, ठीक है। ऐसे डिफरेंट है, एक्सपोनेंट भी देख सकते हो। मैथ डॉट ई चेक करो, ई की वैल्यू कितनी है? 2.7, एंड अगर मैंने exp1 लिखा तो भी वही आएगा, कह रहे। या फिर डॉट पीओडब्ल्यू लेता हूं एंड आई एम गिविंग मैथ डॉट ई कॉमा 1, स्टिल सेम है, क्योंकि ये e रेस टू 1 है, और ये exp1 मीन्स e रेस टू 1, यहां बाई डिफॉल्ट बेस e है, exp always take the base as e, okay, and then we have some trigonometric functions also, ठीक है। मैथ ने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी दिए,
like you want to find out sine or you want to find out cosine, किसी एंगल का कोसाइन निकालना है, साइन निकालना है, tan निकालना है. But only the rule is whatever angle you give, it cannot be in degree. It has to be in radians. जो भी एंगल दोगे वो रेडियंस में होना चाहिए. तो first you have to give the angle in radians and then you'll get the sine of it. Now the question is how to find out degree to radians. अगर मेरे पास डिग्री है तो उससे रेडियन कैसे मिलेगा? तो you just have to multiply that degree with pi by 180. अब ये कन्वर्जन के भी फंक्शंस इन्होंने दिए हैं, डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री. तो व्हेन यू मल्टीप्लाई पाई बाय 180 टू डिग्री यू गेट रेडियन एंड वाइस वर्सा. अगर आपके पास रेडियंस है एंड डिग्री चाहिए रहेगा, ठीक है, तो यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 180 बाय पाई. 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई किया तो आपको डिग्री मिल जाएगा. अंडरस्टैंडिंग क्लियर? ओके. राइट. तो साइन इज देयर, कोसाइन है, टैन है. अगर आपके पास किसी एंगल का साइन है और उससे ओरिजिनल एंगल ढूंढने का, मेरे पास किसी एंगल का कोई भी एंगल है, उसका साइन वैल्यू है, मुझे उससे ओरिजिनल एंगल ढूंढना है. ओके. तो यू कैन यूज ए साइन, दैट इज कॉल्ड एज साइन इनवर्स और आर्क साइन. साइन इनवर्स वगैरह सब भूल गए हैं मुझे पता है. ऐसे लिखते थे हम, साइन इनवर्स ऑफ एक्स. गेटिंग? मींस जिस एंगल के लिए हमने साइन निकाला था, सपोज हमने साइन ऑफ 30, एक्चुअली 30 डायरेक्ट नहीं देते, 30 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है बाय 5 बाय 180 में रेडियन एंड यू गेट सम आंसर. अभी ये आंसर मैंने अगर ए साइन को दे दिया, साइन इनवर्स मैथ्स में लिखते हैं इधर ए साइन, आर्क साइन, और ये आंसर मैंने ए साइन को दिया तो ये आपको ओरिजिनल एंगल लाके देगा. मैं इट विल टेल यू दैट दिस इज द साइन ऑफ विच एंगल. बट अगेन वो एंगल आएगा रेडियन. आपको डिग्री चाहिए तो उसको वापस किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 180 बाई पाई. गेटिंग? दैट इज द रूल. ओके. एंड फिर हाइपोटेनस चाहिए रहेगा. हाइपोटेनस याद है ना, पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्राइंगल. तो दो साइड्स है ए एंड बी, देन यू वांट दिस सी. तो सी इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट निकालोगे तो हाइपोटेनस. तो उसके लिए भी फंक्शन दिया है, तो वो सब ट्रिग्नोमेट्री में आ जाता है. ओके. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ गेम्स एंड एनिमेशन. आई हैव डन इट. मैंने ओपन जीएल वगैरह में से स्क्रीन सेवर्स एंड ऑल सब बनाए थे. गेटिंग? वाटरफॉल्स एंड स्टोन्स इन द वाटर, सब ओपन जीएल मैंने सी प्रोग्रामिंग यूज करता था, ओपन जीएल लाइब्रेरी एंड ऑल. तो देयर ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत ज्यादा. जैसे अगर आपको कार का एनिमेशन है, कार इज मूविंग, तो मूविंग है तो आपको उसकी पोजीशन चेंजिंग दिखानी है. कह रहे हैं, अगर वो एरोप्लेन फ्लाइंग दिखाना है तो एरोप्लेन अगर फ्लाई कर रहा है तो उसमें ट्रांसलेशंस आता है. कह रहे हैं, कुछ रोटेट होते हुए दिखाना है, तो इन दैट केस ऑब्वियसली यू विल नीड ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है. तो दीज मेथड्स हेल्प यू वर्क विथ एंगल्स, ट्रायंगल्स, रोटेशंस, वेव्स, साइन वेव्स वगैरह. साइन वेव वगैरह किया है कि नहीं? साइन वेव, कोसाइन वेव. कोसाइन वेव यहां से शुरू होता है, साइन वेव यहां से शुरू होगा. गिरे? तो ऑल दिस स्पेशली इन ग्राफिक्स एंड गेम्स, गेम डेवलपमेंट वगैरह, उसमें ये ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज्यादा यूज है. तो वी हैव साइन, कोसाइन, tan. ठीक है. देन वी हैव ए साइन, दैट इज साइन इनवर्स, कोसाइन इनवर्स, tan इनवर्स. एंड in this case what it does, a tan 2, it will divide y by x and then find its tan. y by x लेगा, y divided by x. tan एंगल जब निकालना रहता है, राइट, दिस इज y एंड दिस इज x. तो y अपॉन x जो देता है, दैट गिव्स यू द tan एंगल. ये एंगल जो होता है वो tan एंगल होता है. ठीक है.
तो दैट यू कैन फाइंड आउट। तो इनवर्स भी है, साइन इनवर्स, कोसाइन इनवर्स, टैन इनवर्स, देन साइन है, कोसाइन है। इनको डिग्री टू रेडियंस, रेडियन टू डिग्री में लाना पड़ता है, याद रखना, डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। रिमेंबर, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड्स यूज रेडियंस नॉट डिग्री। कह रहे, तो अगर आपके पास डिग्री है तो डिग्री से रेडियन लाना है तो पाई बाय 180, एंड रेडियंस टू डिग्री लाना है तो 180 बाय पाई। आई थिंक उसके लिए भी है फंक्शंस कन्वर्जन के, चेक करना पड़ेगा कि मैथ ने ये कन्वर्जन के भी रेडीमेड फंक्शंस दिए हैं कि नहीं। नहीं है तो हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो सपोज आपको मैथ डॉट साइन ऑफ 30 फाइंड करना है तो डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, आंसर रॉन्ग आएगा। में जो आंसर आएगा वो एक्चुअली 30 डिग्री का नहीं है। तो 30 डिग्री का साइन ऑफ 30 डिग्री अगर चाहिए तो उसको मल्टीप्लाई मैथ डॉट पाई डिवाइडेड बाय 180, करेक्ट, 0.4999, विच इज 0.5। एंड आप चेक कर सकते हो, अब गूगल भी करके देख सकते हो। अपने 10th के टेक्स्ट बुक में भी हमें एक टेबल देते थे, कुछ याद है? एक रहते थे, यहाँ साइन, कोसाइन, टैन लिखा रहता था, और यहाँ डिग्रीज देते थे, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। कुछ याद है क्या? और उसके वैल्यूज रहते थे, कहीं √3/2, 1/√2, √2। डू रिमेम्बर गाइस? कहीं 1/2 है तो साइन 30 1/2 होता है, तो 1/2 मीन्स 0.5, इसलिए इधर 0.5। करेक्ट। एंड अगर आपको इस वैल्यू से ओरिजिनल एंगल चाहिए, ये वैल्यू है मेरे पास, बट मुझे फाइंड आउट करना कि ये किस एंगल का साइन। ठीक है, तो देखो मैथ डॉट ए साइन, ओके, आई गिव दिस, बट आई हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय हाउ मच, 180 बाय पाई। जो आंसर आएगा उसको आई थिंक 180 बाय पाई, मैथ डॉट पाई इज इट गिविंग 30 डिग्री? See, 29.999, which is 30. So it is telling that this is the sine of which angle? Angle 30। और मैंने 30 डिग्री दिया तो मुझे ये साइन है, तो ये मैंने ए साइन को दिया तो ये बताता है कि ये किस एंगल का साइन था, तो इट वाज साइन ऑफ 30 डिग्री। गेटिंग? तो दिस वे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी है, साइन है, कोसाइन है, टैन है, all that you can apply। तो this was about all math क्लास। फिर एक डेट ऑब्जेक्ट है, वो देखेंगे, एंड देन वी विल बी लर्निंग अबाउट हाउ टू क्रिएट आवर ओन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है?